पहले ट्रेलर से जो एआई का लगा हुआ है ना, हाँ ये टैग मतलब मुझे तो डर है कि अगर मैं पूरी पिक्चर रास्ते पे बनाऊं तो भी लोग कहेंगे एआई है। एक एक करके भी अगर मैं टू गिनूं, मेनी गैलेक्सीज। तो मैंने मेरे पीआर को वही बोला कि देख एक एक भी देंगे ना स्टार हर आदमी, तो इतने रिव्यूअर्स हैं कि बहुत मिल जाएंगे। बहुत मजा। कोई मैंने કીધું કે તમે કંજરિંગ જેવી પિક્ચર કેમ નથી બનાવતા? તો મેં કીધું કારણ કે એ લોકો બનાવે છે, એ બી કંજરિંગ બનાવે ને પછી હું બી કંજરિંગ બનાવું, તો હોન્ટેડ કોણ બનાવશે? ટિયર 2, ટિયર 3, इवन टियर 1 में देयर आर एरियाज जहाँ पैचेस या where people like to emotionally connect with the film. मैं काफ़ी डरता हूँ चीज़ों से, आप बिलीव नहीं करेंगी, लेकिन भूत की फिल्मों से भी डरता हूँ। लोग शॉक हो जाते हैं कि यार आप भूत की फिल्म बनाते हैं और आप भूत की फिल्मों से डरते हैं। You know, the fear of losing your loved one is possessiveness. Fear of being left behind is jealousy. Fear of not having enough to eat is gluttony. Fear of losing your appeal, your sexuality is having relationships which are more than one. Constant validation. Sir is not just an actor's director. He will see through your eyes into your soul. ये आत्मा के director है. And I just wonder how can a man go after going through so much in life, the good and the bad, can still be the way he is. That is what amazes me. What my life teaches me is to not overtly celebrate success or overtly be depressed about the bad. रोज का ना अभी इंटेलिजेंस बढ़ गया. आई थिंक उन लोग भी चैट जीपीटी में जाके उन लोग हम लोग को एआई की बात कर रहे हैं विद एआई. दे आर एक्चुअली गोइंग टू एन एआई asking what kind of trolling we can do and then give those replies. Yeah. Hi, this is Vikram Bhatt and you're watching me on Midday. Hi, this is Mimo Chakravarti and you're watching me on Midday. ગુજરાતીમીડિયા.com સાથે આજે છે ડિરેક્ટર વિક્રમ ભટ્ટ અને એક્ટર મીમો ચક્રવર્તી. અને તમને ખબર છે કે આપણે બધા શેને વિશે વાત કરવા આવ્યા છીએ. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू बोथ कि जब पहली फिल्म बनी थी हॉन्टेड और आज एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है, लोगों को तब किन चीज़ों से डर लगता था और अब किन चीज़ों से डर लगता है? व्हाट कैन स्केयर पीपल? आप गुजराती में क्यों बोल रही थी? बिकॉज मेरा ओपनिंग कट मैंने गुजराती में लिया बिकॉज आई हेड द गुजराती वेबसाइट. मगर ये गुजराती में जाने वाला है या हिंदी में भी जाएगा? ये हम जिस भाषा में बात करेंगे उसी में जाएगा. तो अगर गुजराती में बात करूँ तो આપણે ગુજરાતીમાં કરીશું. ઓકે, તો મને મોકો નથી મળતો ને ગુજરાતીમાં વાત કરવાનો. બોલો, મેં તમને એ જ કીધું કે આપણી સાથે મીમો છે એટલે આપણે હિન્દી ઇંગ્લિશમાં વાત કરવાના છે. કરશે ને ઇંગ્લિશમાં હિન્દીમાં. इंग्लिश हिंदी मेरा डिपार्टमेंट. બેંગોલીમાં બી કરી શકશે. ऑफ कोर्स. આજે આપણે ગુજલીશ અને હિન્દી એ ત્રણ ભાષામાં વાત કરવાના છીએ. યસ. તો તમારો પ્રશ્ન એ છે કે અત્યારના હોન્ટેડમાં અને ત્યારના હોન્ટેડમાં અંતર શું છે અને લોકો શેનાથી ડરે છે? એટલે ફિયરની ડેફિનેશન પણ સમય સાથે બદલાઈ હોય ને. ફિયરની ડેફિનેશન લાગણીઓ એક સરખી હોય, બટ યુ નો વોટ આઈ મીન. હા, પણ ફિયર તો એક એવી વસ્તુ છે ને કે એટલા કરોડો વર્ષોથી આપણા ડીએનએમાં છે. એ કંઈ 10, 12, 15 વર્ષમાં બદલાય નહીં. જે આપણે પ્રેતાત્માને કહીએ કે ભૂતની ને એવી બધી જે વાતો હોય એનાથી જે આપણે ગભરાતા હોય એ તો ભલે ને એઆઈ આવી જાય ને આવી જાય તે આવી જાય, જે આવવું હોય તે આવે, એ તો રહેશે જ, એ ડર તો રહેશે જ. એટલે જ તો આવા પિક્ચરો સેફ છે. હોરર ઓલવેઝ વર્ક્સ. કારણ કે કોઈ બી વર્ષ હોય, 2026 હોય કે 2050 હોય, ભૂત જ છે. ભૂત અપગ્રેડ નથી થયા? ભૂત અપગ્રેડ નથી થતા ભાઈ. ભૂત ડાઉનલોડ બી નથી થતા, અપલોડ બી નથી થતા. પણ છે જરૂર. ઓફકોર્સ છે.
सो व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज आप पहली फिल्म का हिस्सा भी थे और अब ये कहानी कहने का तरीका भी बदल चुका है. बदल चुका है. नहीं, जैसे सर ने कहा कि फियर विल ऑलवेज बी फियर. वो आप कभी यू कैनॉट रेप्लिका समथिंग विच इज़ सो एंशियंट. फ्रॉम द प्रिमिटिव टाइम्स आई थिंक हमारे जो DNA में है, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट सर्वाइवल. एंड आई थिंक अ ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन कैन ओनली बी फिगर्ड आउट जब वो उस फियर के साथ फेस टू फेस आ जाए. यस. एंड आई थिंक हॉरर ऐसा एक एलिमेंट है विच विल नेवर ग्रो आउट ऑफ स्टाइल. Because it's the unknown. Yeah. And as human beings, we're always curious and scared and excited about the unknown. Okay. अगर आपने उसको सही तरीके से टैप कर लिया, it can be a 2.0 जैसे सर ने कहा, और a 3.0 और a 4.0. But the 1.0, the original, that core will never go. I think you scratch the surface and things are same. I think whether it's गुस्सा, प्यार, डर, वो सब चीज़ें, इच्छाएं, आई थिंक यू स्क्रैच द सरफेस एंड थिंग्स आर सेम. इसीलिए शायद स्टोरी टेलिंग एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन भी है, और इसी वजह से वी कैन ऑलवेज Connect to it. टैप एंड कनेक्ट. Absolutely. તો ફિલ્મની વાત કરીએ તો આઈ થિંક તમે પહેલાં પણ ક્યાંક વાત કરી છે કે જ્યારે એનું ટીઝર આવ્યું તો એઆઈના યુઝને લઈને બહુ જ યુ વર ટ્રોલ. તો તમને કોઈ હોન્ટેડ મેન્શનમાં રહેવાનું ગમશે કે યુ વિલ પ્રિફર લુકિંગ એટ સોશિયલ મીડિયા ટ્રોલિંગ ફોર અ વીક? સોશિયલ મીડિયામાં જો તમે એકદમ ધ્યાનથી જોવા જાઓ, ધ્યાનથી શું, બે ધ્યાનથી બી જોવા જાઓ ના પણ જુઓ તો પણ તો તમને ખબર પડશે કે કોઈ બી કોઈનાથી ખુશ નથી. ટ્રુ. કોઈ બિચારો કે આમ પોતાનો હેન્ડસમ ફોટો નાખે, એની નીચે કે કદ્દू लग रहा है, आलू लग रहा है, निकाल दे, कुछ नहीं होगा. બિચારાનું આમે તે 15-20 ફોલોવર હોય છે, એમાં આવું બધું બોલીને વધારે બિચારાના ઓછા થઈ જાય. જે મારા જે ટ્રોલર્સ હોય છે, કોઈક વાર હું જઈને જોઉં કે આના ફોલોવર કેટલા છે, આ કરે છે શું, તો એક તો લોક હોય એનો પ્રોફાઇલ, ને કાંઈ 2 પોસ્ટ હોય ને 5 ફોલોવર હોય. મેં કીધું આને તો આવી રીતે જ ફોલોવર મળશે બધાને ગાળ આપીને, કારણ કે આ બધાનું સારું કહેશે તો એને ફોલો કોણ કરશે? કોણ સાંભળશે એને? ટ્રુ. એટલે બિચારા બહુ આમ કહીએ ને આપણે બેસહારા લોગ હૈ કે બદનામી મેં ही નામ હૈ. ગુજરાતીમાં બધી કહેવત છે ને, ભસતા કૂતરા કરડે નહીં. જે લોકો બીજું કાંઈ ન કરી શકે તે જસ્ટ વાક ઓન સોશિયલ મીડિયા. એટલે કોઈએ તો મને કીધું કે આ તમે એઆઈમાં બનાવ્યું છે, એ બધા રિયલ હતા લોકેશન. મેં કીધું પણ આ તો રિયલ છે. હે? ના હોય. મેં કીધું હોય. શું કામ? તને નથી ખબર એટલે ન હોય એવું તો ન બને ને. પેલો ક્લાઇમેક્સમાં બધું તોડે છે ને, ફોડે છે પિક્ચરમાં, ત્યાંની ટાઇલ્સ વાઇલ્સ, तो कि वो टाइल तो ऐसा एकदम फेक लगता है. मैंने बोला वो इडियट वो रियल है वो. तो अभी वो भी कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज, सब लोग कंफ्यूज कि ये है किधर से. Yeah, when you can't convince, confuse them. Best thing. तो मैंने बोला ठीक है यार, आपको अभी ये क्या एक लत लगी है. वो पहले ट्रेलर से जो एआई का लगा हुआ है ना, हाँ ये टैग वो मतलब मुझे तो डर है कि अगर मैं पूरी पिक्चर रास्ते पे बनाऊं तो भी लोग कहेंगे एआई है. और एक अजीब बात तो ये है कि पहला આપણે પિક્ચરો છે ને સેટ પર શૂટ કરતા. હજી પણ થાય છે ને સેટ્સ તો સીન આપણે શૂટ કરીએ ને તો આવા આપણા કોડ નથી હોતા કઈ. બિલકુલ નહીં. મિલોડ ને એવો ત્યાં ઊભો હોય ને પાછળ ઓલો દંડો લઈને ઊભો હોય ને એવું કઈ નથી હોતું કોડમાં. ને આમ બધા બેઠા હોય ને બધા આખું હાઉસફુલ હોય ને એમ બધું. મેરે મુવક્કિલ ને એ કોણ આવું મેરે કાબિલ દોસ્ત મુવક્કિલ કોણ બોલે છે? મુવક્કિલ ભાઈ. પણ આપણે એવું નથી કહેતા કે એ તો સેટ હે. ત્યાં આપણે ક્વેશ્ચન નથી કરતા. યા કેટલા પિક્ચરોમાં આમ સેટ દેખાય, ડિસ્કોના સેટ ને આના સેટ ને. सेट है ना वो चलेगा, वर्चुअल सेट नहीं चाहिए. तो क्या है, बहुत स्पेसिफिक मांग है लोगों की. इट्स लाइक गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड सेइंग मैं पालक पनीर खाऊंगा लेकिन पालक साइड पे होना चाहिए, पनीर इधर होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा वो होना चाहिए. एकदम स्पेसिफिक पिक्चर बनाना चाहिए. पर टेस्ट पालक पनीर की होनी चाहिए. वो चाहिए. वो चाहिए.
What do you have to say about trollers? Same thing. What Sir says, I think it's just noise. I think एक होता है opinion देना. Like for a person like me or Sir or even you, अगर हम लोग पिक्चर देखने गए और let's say कि मैं फैन बॉय और मुझे पिक्चर अच्छी नहीं लगी, फ़र्क हम में और उनमें इतना ही है कि हम आपस में बात करेंगे और वो पूरी दुनिया को बोलेंगे. That is where the difference comes in. I'm not saying that you have to like the movie, but there is something about disliking something. There is something about disheartening someone. वो लाइन इन लोगों को पता नहीं है. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके एक शब्द है. एग्जैक्टली, इट्स नॉट कंस्ट्रक्टिव. आजकल तो जिसके पास भी फ़ोन है ना, वो रिव्यू देता है, खड़ा हो जाता है एंड 2 स्टार 3 स्टार. भाई तू कौन है? तू कोई सिनेमा का लवर है? तूने इंटरनेशनल पिक्चरें देखी है? तूने इंडियंस की ग्रेट फिल्में देखी है? राज कपूर की सारी देखी है, गुरुदत्त की देखी है, सौरभ मोदी की देखी है, मेरे ग्रैंडफादर विजय भट्ट की देखी है. तो मैं कह सकता हूँ कि भाई तू कॉनोसियर है फिल्मों का. तूने आधी अधूरी कुछ पिक्चर देखी है, कहीं से आईफोन लेके आया है और शुरू हो गया 2 स्टार 3 स्टार. तो इतने स्टार देते हैं आजकल भरपूर, एक एक करके भी अगर मैं टू गिनूं मेनी गैलेक्सीज. तो मैंने मेरे पीआर को वही बोला कि देख एक एक भी देंगे ना स्टार हर आदमी, तो इतने रिव्यूअर्स हैं कि बहुत मिल जाएंगे. बहुत बेटर. हम सब इकट्ठा भी सरवाड़ो કરીને करने लईशु ना. हम हाँ, तू एक दे दे, तू एक दे दे. इतने लोग स्टार दे रहे हैं, सब मिला के हमारे एकदम फर्स्ट क्लास हो गए हैं. बैंक भर गई है हमारी. All good. So this film is not just खाली horror नहीं बात ना थी, सिर्फ horror की बात नहीं है. And Vikram, if I say the kind of films that you have made, it starts with horror, somewhere it ends with lot of emotions. ये फिल्म जो है वो memory और guilt का एक जो एक बहाव है, ये जो कहानी है उसकी बात करती है. तो ये जो 2 इमोशंस है उनको लेकर आपके क्या पर्सपेक्टिव है? તમારો શું दृष्टिकोण છે और आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं? आई बिलीव कि जो हमारे इस फिल्म में जो मैसेज है, स्पेशली आई थिंक इफ यू वांट टू राउंड इट अप, इट्स अबाउट karma. कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सर ने जो मैसेज दिया है, वेरी ब्यूटिफुली इज गिवन इट थ्रू अ लव स्टोरी, थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम हालांकि में वी हैड गॉन, मी एंड चेतना हैड गॉन फॉर अ स्क्रीनिंग. हम लोगों ने सरप्राइज दिया था टू द फैंस और उन्होंने कहा था कि आपकी फिल्म तो बहुत अच्छी है, पर इसमें जो कर्मा का मैसेज है ना, वो बहुत खूबसूरती से आपने दिखाया है. बिकॉज लोग कनेक्ट करते हैं उसके साथ. बिकॉज समवेयर पीपल बिलीव के, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू नेवर डू बैड थिंग्स और कुछ नहीं होता है. सेल्फिश तो कोई है Good नहीं. is boring. You have to be bad. Exactly, you have to have that grey line. But to intentionally harm, जैसे हम अभी ट्रोल्स के बारे में कह रहे थे, जी. कि to intentionally harm someone just for pleasure or for your own selfish motives, कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी सिखाई देगी वो लेसन कि it's not cool, it's not chill. इसमें क्या, it reverberates through generations in Haunted. And that is something which I think everybody connects to more. And it does exist. Because क्यों बोलते हैं कि अच्छा करो, अच्छा होगा, बुरा किसी का मत सोचो. Because that's what life is. Life is about being to live and let live. True. I firmly believe in that. कि यार अपना करो, let me do my thing. I will not destroy yours, you don't destroy mine. ગુજરાતીમાં કહે છે ને, તું તારું જો. તું તારું જો ને ભાઈ, તારું ન જોય તો ન જો, મારું નહીં જો. મારું ન જો. બસ મારું નહીં જોવાનું. મારે જવાબ આપવાનો છે. હા, ગિલ્ટ, મેમરીઝ, એનો એક એક આખો તો મને ઇમોજ શું હોય લાગે છે કે Yeah. આપણી જે પિક્ચરો છે ને, કોઈએ મને કીધું કે તમે કન્જરિંગ જેવી પિક્ચર કેમ નથી બનાવતા? તો મેં કીધું કારણ કે એ લોકો બનાવે છે, હે ને. હવે એ બી કન્જરિંગ બનાવે ને પછી હું બી કન્જરિંગ બનાવું, તો હોન્ટેડ કોણ બનાવશે? તો આપણો જે આર્ટ ફોર્મ જે છે ને, ઇન્ડિયન હોરરનું એક આર્ટ ફોર્મ છે જી. પહેલેથી. 20 સાલ બાદ Of course. वो कौन थी, म्यूजिक, महल, Even the kind of films that Ramsey Brothers made. Correct. Of course. म्यूजिक होता है उसमें रोमांस होता है. और ये जो ऑब्सेशन या बैकरूम या ये जो हॉलीवुड की पिक्चर है, वो बिगिनिंग से लेके एंड तक हॉरर होती है. लेकिन बिगिनिंग से एंड तक हॉरर की जो ऑडियंस है वो सिर्फ सिटीज़ में है. जो एक्चुअल
हॉरर देखने वाली जो हमारी जो ऑडियंस है वो टियर 2, टियर 3, इवन टियर 1 में देयर आर एरियाज जहाँ पैचेस या where people like to emotionally connect with the film. Because when they emotionally connect with the film, they connect with the actors. आप देखेंगे यहाँ पे बहुत इंडिया में हॉरर फिल्में बनी हैं अच्छी अच्छी, लेकिन वो चलती नहीं है, जिसमें गाने नहीं होते, जो मतलब हॉलीवुड हॉरर टाइप होती है, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ हॉरर से कनेक्ट नहीं करते. जैसे स्लैशर फिल्म है कि एक के बाद एक मर्डर हो रहा है, वो बोर हो जाते हैं, कभी एक और हो गया यार. लेकिन गुमनाम अलग है, उसमें गाना भी है, वो भले अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल के ऊपर है. एग्जैक्टली ये भले 10 लिटिल इंडियंस पर थी है करेक्ट, बट इट्स डिफरेंट. या तो हमारा एक आर्ट फॉर्म अलग है. या अब क्या है कि हम ये नहीं क्वेश्चन करते कि हमारी लव स्टोरी में गाना क्यों है, हमारी कॉमेडी में गाना क्यों है, हॉरर में गाना क्यों आता है. अरे यार ये मेरी मर्जी है भाई, हर फिल्म में गाना, अब मेरे को गाना नहीं देंगे आप क्योंकि मैं डराना चाहता हूँ इसलिए. फिर कहते हैं यार ऐसा क्यों है कि सिर्फ हॉरर फिल्मों में अच्छा गाना है. मैंने बोला यार हमारा टेस्ट अच्छा है गानों में, तो क्या मार दे खुद को, क्या करेंगे आप. तो ये एक बड़ा कमाल का किस्सा सुनाता हूँ. मेरी एक फिल्म है 1920 या जिसमें एक प्रीस्ट है, वो एग्जॉर्सिज्म कर रहा है, द पावर ऑफ क्राइस्ट कंडेम्स यू, ऐसा सब बोल रहा है, और सारी सिटी ऑडियंस मस्त देख रही है. जहाँ हनुमान चालीसा शुरू हुई ना, वहाँ एक पार्ट ऑफ द ऑडियंस, ओ मैन दिस इज द सेम थिंग यार, व्हाई कांट वी डू इट विदाउट मंत्रस एंड बाबाज एंड ऑल. यार लेकिन अभी तक तो वो बोल रहा था प्रीस्ट, तो उनका भगवान सोफिस्टिकेटेड और हमारा भूत में भगवान, इंग्लिश खबर पड़ती है. हाँ, और हमारा भगवान ऐसा. तो क्या है, आप एग्जॉर्सिस्ट देखेंगे Oh God, उसमें भी सेम होगा. या वो क्राइस्ट का नाम लेगा, उसमें भी वो उल्टी करेगी और किसी के मुंह पे कुछ डालेगी, या लेकिन वो आपको अच्छा लगता है. लेकिन अगर हमारा कोई तांत्रिक बाबा आ गया तो आपका लगता है कितना रिग्रेसिव है यार ये सिनेमा. हमारे रूट्स हमें रिग्रेसिव लगते हैं, हमारा जो डीएनए है हमें रिग्रेसिव लगता है, व्हिच इज अ सैड पार्ट. या મેરેજ કોઈને પણ ભૂત વળગે તો તો લોકો ભગવાન પહેલા તો- સારંગપુર જ જાય છે અંદર દિવસ જ જાય છે. તો ત્યારે That is a fact. ભુવને જ બોલાવે ને, Exactly. We don't go to a church caller. ડોક્ટર શું કરે બિચારો, Yeah, exactly. એને બી વળગી જાય. એવું છે બેન, શું કરીએ. So fear. What does fear mean to you? તમારી પર્સનલ વાત કરીએ તો what does fear mean to you, Memo? What scares you? Uncertainty. I am a kind of guy who likes to plan things. I'm a man of routine. I'm a man of things which I don't know. I won't say I'm a man of control, but a man of at least I need to know what I'm doing in the next few days, you know. And when uncertainty arises, that's fear for me because that gives me anxiety. Thinking कि यार इधर जाके मैं क्या करूँगा. Yes. Like आज का भी दिन I know I have mapped it in my head. So that gives me like kind of calmness. अगर suddenly मुझे बोलो इधर कहीं जाना है, I might end up going, but I'll not be 100%. But man proposes and God disposes. प्लान के मुताबिक तो हर बार कुछ होता नहीं जाता ही नहीं, I know, but that is the irony कि यार that uncertainty is what, the spontaneity I will never do. मेरे से होता ही नहीं. I'm a man of simple routine and spontaneity is something which is the dark side for me, like how certainty is. Yeah, Okay. that's for me. Dark side. Yeah. Fear. ડર શું છે Actually, તમારી માટે? मैं काफ़ी डरता हूँ चीज़ों से. आप बिलीव नहीं करेंगी लेकिन भूत की फिल्मों से भी डरता हूँ मैं. लोग शॉक हो जाते हैं कि यार आप भूत की फिल्म बनाते हैं और आप भूत की फिल्मों से डरते हैं. तो मेरा जवाब ये होता है उनसे कि अगर आप में अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आप कॉमेडी कैसे बनाएंगे. अगर आपके अंदर प्यार की भावना नहीं है How will you make तो romantic? रोमांटिक फिल्म कैसे बनाएंगे आप.
तो सिमिलरली अगर आप डर महसूस नहीं कर सकते तो आप किसी और को डर कैसे महसूस करवाएंगे? बहुत मुश्किल है। और वैसे अगर आप देखिए तो डर जो है ना वो एक इमोशन है जो हर प्राणी में, बल्कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहूँ, कहते हैं कि जब डर से धीरे धीरे जब प्राणी ऊपर प्यार अनुभव करना शुरू करता है तब वो इवॉल्व होता है। अब ये देखिए कोई सिंगल सेल क्रीचर भी डरता है, क्योंकि अगर डर ना हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल के लिए डर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही खड़े हैं और ट्रेन आ रही है और आपको डर का एहसास ही नहीं है तो मर जाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए डर ज़रूरी है, लेकिन सर्वाइवल के लिए प्यार ज़रूरी नहीं है एनिमल्स के लिए। इसलिए यू कांट ट्रस्ट वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन जैसे जैसे एनिमल इवॉल्व होता है, डॉग्स, कैट्स, क्रोज, डॉल्फिन्स, monkeys, elephants, तो they understand love, and that's why they are higher up on the chain of evolution. True. हर इमोशन डर से जुड़ा हुआ है. You know, the fear of losing your loved one is possessiveness. Fear of being left behind is jealousy. Fear of not having enough to eat is gluttony. Fear of losing your appeal, your sexuality is having relationships which are more than one. Constant validation. हर इमोशन को अगर आप ट्रैक करेंगे प्यार को छोड़ के, या प्यार से उभरते हुए इमोशन को अगर आप छोड़ देंगे तो मैक्सिमम सारे इमोशन डर से पैदा होते हैं. इसलिए जो ह्यूमन एनिमल भी है वो डर बहुत बेसिक लेवल पे फील करता है. Interesting, very interesting. See, I have seen him talk, you know, during COVID he was telling some interesting stories on Instagram, and I'm his ardent fan. Thank you. We all are. And we are Bhatt, so yeah, sorry. Oh, yes, of biased. That too. That too. Sir. Biased. इनके साथ काम करके आप क्या सीखे? It'll honestly not because he's sitting here, but I'm very, very happy to say that Sir and me actually have a father-son relationship. You know, we have had discussions where I've been very open to him, he's been very open to me. And of course, the actor and director are always there on set. But we have had that relationship where I have spoken to him as a father. He's spoken to me as a son. And I'm very happy and proud of that. But I think that, you know, as an actor, log kehte hain na ki there are some directors who are actors directors, you know, samjhate hai. Sir is not just an actor's director. He will see through your eyes into your soul. ये आत्मा के डायरेक्टर है. And I'm very proud to say that because there have been instances in Haunted जबकि अभी एक्टर के हम लोग अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं हमने अच्छा शॉट दिया है, you know. But सब ने बोला भी ये शॉट अच्छा है. He will say one more and I'll go and ask him कि सर क्या हुआ? बोला मीमो, do it this way. That's it. And immediately for some reason I've understood what he wants. समझ में आ जाता है. And the next take is exactly how he gets it and it's moved on. That is why, because ये ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन आके दिखाएंगे कि ये फील करो वो फील करो. In fact, I remember for the first Haunted also, जो last जो shot था where he zooms out, he just came and told me one sentence and that made sense for that entire shot about loss. You know, that's it. It's how he communicates with you, and that is the best part. It's the subtlety because he's seeing inside. No? हम सब performance देख रहे हैं. He's seeing the soul, and when you capture that, that's what is seen in camera. That's what he is. He's a soul's director, not an actor's director. उन्होंने कही हुई कोई बात जो आपके मन में घर कर गई हो कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था, because I believe that he is a very perceptive person. Not that I've spoken with him a lot, but I know of him whatever I can. So ऐसी कौन सी बात है? Sir is very spiritual, you know, and the thing is, हमें लगता है कि just because you know we have read some quotes or read a few books that we become spiritual. I think Sir's experiences are very spiritual. He has seen life which I still don't understand. Honestly saying, I can't comprehend to think the way Sir does. I mean, he behaves like all of us, you know, he talks like all of us, but there's something more in him.
That's why आप जिससे भी जब भी even if you're like talking to him now, even when people hear him, there is a very soothing melody to what he says. And it's not that he's playing and he's not playing a character. It's just who he is because he's evolved. So sir का क्या, you know, if you ask me that one thing, it'll be very hard for me to tell you that one thing. It's his presence. You know, being on a set of like Haunted, you know, Yeah. the scenes where they were very challenging to us actors, but he always kept us in the norm. Calm, chill, joking, you know, making us laugh because he knew that this is difficult. Because when a person reaches that level of consciousness, you automatically feel that why I feel so secured and so relaxed. So it's the totality of him. I think it's his presence. If you ask me what I've like one thing, it's the presence. It's a soothing presence. Even now, whenever I walk into the office, when I meet him, it's just that there is like this calm in the air. Even on the premiere day, hum log the, I was all over the place. He was not moving. He was like, and I just wonder how can a man go after going through so much in life, the good and the bad, can still be the way he is. That is what amazes me. हम उनसे यही पूछते हैं કે જિંદગીએ તમને બહુ જ બધા સારા માઠા નરસા ઘણા બધા અનુભવો આપ્યા છે. તમે જિંદગી પાસેથી શીખેલી એવી કઈ બાબતો છે જે તમે જેને આપણે કહીએ ને ગાંઠ વાળીને રાખી છે કે આ આમ જ હશે કે એ તમે કોઈ બાબતો માટે જળકમળવત હોય, એટલે કમળના ટીપા પાંદડા પર પાણીનું ટીપું પડે તો એ પણ સરી જાય. નથિંગ ઇફેક્ટ્સ યુ, નથિંગ હેઝ એન ઇમ્પેક્ટ ઓન યુ. વોટ ઇઝ વિક્રમ ભટ્ટ? હુ ઇઝ વિક્રમ ભટ્ટ? શું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે વિક્રમ ભટ્ટના? સામગ્રી શું છે? No, I believe in my duality. I believe Wow. that I am not Vikram Bhatt. I believe I'm a soul who is having the journey as Vikram Bhatt. So when you actually curse Vikram Bhatt, even I get amused. That यार ये बेचारा ठीक ही है यार, उसको गाली दे रहे हैं या इसे विक्रम देव को गाली दे रहे हैं. एक जैन मास्टर था जिसका डिसाइपल जो था वो झगड़ा कर रहा था किसी से. तो जैन मास्टर आए, बोले क्या हुआ? बोला मैंने सुना इस आदमी ने आपको गाली दी. हाँ, तो इसे मैंने ली नहीं, लेकिन આ બુદ્ધની ઝઘડા પણ ક્યું કરવા? બુદ્ધ સાથે પણ આ સિમિલર ઘટના થઈ હતી. So इसे मैंने ली नहीं. So I feel that I have chosen this life. I have chosen my parents. I have chosen the events of my life. And I've chosen the events of my life so that they make me a better person. I have not chosen the events of my life so that I get bitter. And that is the test. I have seen fantastic heights. I've seen Horrible terrible lows lows. too. Yeah. I've seen money crunches. I've seen legal problems. I've seen being in custody. I have come out of custody and I have a hit film. So I have a very strange life. But what my life teaches me is to not overtly celebrate success or overtly be depressed about Things, yeah. the bad. Of course, it gets to you. But when you become an observer and you realize, okay, so what is it? And I think that I have chosen this path because I have promised God that whatever He does, I will not lose my faith on Him. Whatever He does, I will not walk away from Him. Whatever He does, I will always be a God-loving, not fearing, but God-loving human being. And nothing will break my faith in my God. And that, I think, is my journey. વાવ. તમારી પાસે લોકો બહુ જ સલાહ માંગવા આવતા હશે. કોઈ નથી આવતું. कुछ भी. તમે જ્યારે ક્યાંક ગૂંચવાઓ કે કન્ફ્યુઝ થાઓ, where do you go? To your Lord Krishna? Krishna, my ma,
I do. I'm doing my Shri Vidya, and I'm a Shri Vidya Upasak. And I'm guided. I will tell you a strange incident. Sometimes I hear a voice which is as loud as I am talking to you, Wow. Wow. and it scares the daylight out of me. There was a time when I was not going to temples. I still don't go to temples too much. And I used to keep saying that, God is within you, God is within you, why should you go to a temple? And one day I was just passing this temple और मैंने देखा कि बाहर कुछ लोग हैं लाइन लगा के, मंडे का दिन था, वो दूध चढ़ाने आए थे शिव जी शंकर नु के शिवलिंग पे. तो मैंने वो लाइन देख के कहा कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, भगवान तो अपने अंदर है. तो ज़ोर से किसी ने मुझे गाड़ी में कहा पीछे से कि अगर भगवान अंदर है तूने ढूंढने की कोशिश की. मैंने टर्न करके देखा कौन है यार, कौन बोल रहा है, मतलब इतना लाउड. वाओ. तो कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि यार ये क्या है, क्या द ग्लिच इन द मैट्रिक्स. तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ, लोग शायद पागल समझेंगे मुझे कि ऐसा थोड़ी होता है. हर चीज़ में मानने वाले लोग हैं, बर्थ रीबर्थ, भगवान, कोई कहते हैं बस यही है. लेकिन आप चैट जीपीटी से ज़रूर पूछिएगा इज देयर गॉड, उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है. In fact, there was an exhibition in Bombay on Lord Krishna and Vishnu Avatar and all that. And the guy who curated that exhibit, I was talking to him and he showed me some chats. He said, I literally told ChatGPT to talk to me as if I am Arjuna and he is Krishna. I was like, okay. And a बहुत interesting answers था. वो बहुत ही, I was like, wow. But yeah. So what's your relationship with AI, both of you? चलो. थोड़ा. Have you AI been is on a my- date with AI? No, I'm not going down that avenue where I have to speak to bots for emotional this thing. But Support, AI is very yeah. good for analysis. Always, yeah. AI, I mean, I use Claude Code Yeah. for a lot of my work. Yeah. A lot of my technical work is taken care of by that. Like, even for this film, I wanted short numbers. So I would just put a reel on my desktop and I would say, Claude, just give me all the short numbers in this reel. And it would just, in 5 minutes, give me all the short numbers. So that is what AI is. Yeah, grunt work Correct. માટે it's AI is a ideal. tool. Yeah. You ask for analysis that pick up data from everywhere. Yeah. Or if you are writing a historical film, just say, keep checking on Fact the check, historical references, Yeah. So, for all that, it is very good. I think AI will definitely strip us of a lot of jobs. And we should really be concerned about AGI. Because that is a worrisome thing. Because the only thing that makes us special is that we can feel. AI has no sense of feeling. But I had a very interesting chat with Claude on this. And I said to Claude, I said, you say that the consciousness doesn't live in the brain. It lives outside, which is why जब आप मर जाते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस है जो सर्वाइव करता है. तो अगर ब्रेन में होता तो मर जाता. तो अगर कहीं से डेटा मेरे अंदर आ रहा है, ब्रेन के अंदर, तो मैंने क्लॉड से कहा फिर तू भी तो वही है मीडियम, कहीं से तेरा डेटा आ रहा है. आ रहा है, हाँ, ट्रू. तो मैंने कहा डू यू फील? बोलता आई डोंट नो व्हाट इट इज टू फील. फिर उसने कहा नॉट येट. Not yet. Yeah. True. So I'm concerned how artificial general intelligence is going to pan out.
But I think 95% of the world doesn't know what's coming. Yeah. And 2026-27 is going to be a year that's going to shake us up. Right from disclosure to AGI. True. It's all going to happen. True. What is your relationship with AI? Mine, as Sir said, it's definitely a tool. Like, whenever I'm confused about stuff or simple tasks which I need to do, I do it. But I also understand that AI is built in order to understand an individual. Like, for example, Claude, if Sir asks him or it a question, it will understand and adapt to Vikram Bhatt, Of to the course. person. Yeah. That is something which is very useful, because somewhere, like, if I'm confused about things, or sometimes when things take a toll, I take it as a toolbox to kind of vent, because I know that it's going to give me answers which I want. It's like an escape. It's not dependency. Customized. Yes. It's a customizable escape. I think that's the right way to put it. Yes. It's like that it is something that you will hear, and it kind of leans on to make you happy. But at the end of the day, it's just like a vent box, which is a very good vent box. Yeah, it's like that. Like a very quiet social place where you are venting out your feelings, but at the same time, that it's just for you. It's not like the remedy. हॉन्टेड की बात करते हैं फिर से. सबसे अच्छा क्या सुनने मिला और जो सुन के ऐसा लगे कि यार ऐसा तो मत बोलो, ऐसा क्या हुआ? ऐसा मत बोलो तो जो ट्रोल्स है उनका तो आई वांट टू से दिस कि ट्रोल्स का ना अभी इंटेलिजेंस बढ़ गया. आई थिंक उन लोग भी चैट जीपीटी में जाके उन लोग हम लोग को एआई की बात कर रहे हैं विद एआई. They are actually going to an AI, asking what kind of trolling we can do, and then give those replies. Yeah. But the good thing is everybody's asking for the third. I think that's like they want to complete the trilogy, which, I mean, they like the second. That's why they're asking for the third. Yeah. And the people, as I mentioned to you before, everybody is connecting to the story. Okay, I think the horror element to hey, it's haunted. There are times when people are getting scared, but people are connecting to the love story. I think that is done so beautifully in the film that you're connecting to these characters. You're connecting to Dev and Suneri, because जैसे सर ने कहा, it's the love which binds them together. देखिए ये जो है ना, सॉरी 20. No, please. ये जो AI की बातें हैं ना, ये सब बकवास है. पिक्चर अगर आपको कहीं छू रही है और कहानी देखने आते हैं लोग, you don't get 100 marks for good handwriting. कि मैंने बहुत अच्छी जगह शूट किया है, बहुत अच्छे कैमरा से शूट किया है, उसका ये मतलब नहीं कि मेरी पिक्चर चलेगी. लेकिन एक कमरे में किया है, AI से किया है, लेकिन कहानी अच्छी है तो लोग आएंगे. बैड हैंड राइटिंग बट द राइट आंसर विल गिव यू द मार्क्स. गुड हैंड राइटिंग विथ नथिंग कुछ नहीं होगा. तो ये सब हम लोग हैंड राइटिंग की बात कर रहे हैं कि ये है वो है. अब जो हैंड राइटिंग में आदमी फंसा हुआ है, जिसका माइंड हैंड राइटिंग में है, तो मैं बोलूँगा तो ऐसे मैं क्या बहस करूँगा. तू तो हैंड राइटिंग पे लगा हुआ है, तू आंसर तो पढ़ ही नहीं रहा है. तो कुछ ऐसा सा है. सो स्टोरी टेलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो पार्ट 1 में जो कहानी थी, पार्ट 2 में जो कहानी है, और બીજી ફિલ્મ બની એ પહેલાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ પણ થયા. તમને લાગે છે કે ઇશ્યુઝ ન આવ્યા હોત તો કદાચ આ વાર્તા તમે જુદી રીતે કહી શક્યા હોત? नहीं, कहानी तो यही थी पहले से ले दे के. ऐसा नहीं है कि हमने कहानी चेंज द टेलिंग द नरेशन स्टाइल, डू यू थिंक इट वुड हैव चेंज्ड कि ना? आई थिंक यही होती ले दे के. कुछ कंस्ट्रेन जे बधा कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी, लाइक व्हेन माय मदर पास्ड अवे लास्ट सितंबर, 6th of September, उसके बाद मैंने जन्मों जन्म गाना देखा था. वो शायद गाना मेरे अंदर से ना निकलता had I not faced that tragedy. I remember my father started crying when he heard the song. क्योंकि जो आप होते हैं वही आपकी फिल्म होती है. आपसे अलग नहीं हो सकती आपकी फिल्म.
और शायद इसलिए इतनी इमोशनल है क्योंकि मैं एक बड़ी इमोशनल जर्नी से गुजरा हूँ इस फिल्म को बनाते हुए। और मैं ही नहीं, मीमो भी अपनी इमोशनल जर्नी से गुजरा है, चेतना गुजरी है। मुझे उसकी इमोशनल जर्नी पे बात करने का हक नहीं है, लेकिन कभी आप उनसे पूछें तो उनकी भी एक इमोशनल जर्नी रही है। हम लोग कुछ पिक्चर बनी 2 साल में, लेकिन मुझे लगता है कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस मिल गया हमको इमोशनली। એટલે એ મેચ્યોરિટી, એ પર્સપેક્ટિવ્સ, એ બધું જ આઈ થિંક આમાં ઉમેરાયું. સો વેન ડુ વી એક્સપેક્ટ ધ થર્ડ ઇન્સ્ટોલેશન? आज सक्सेस पार्टी है, That's true. आज सब लोग पिएंगे, मैं तो पीता नहीं, ये भी नहीं पीता, मैं नहीं तो हम लोग सबको ड्रंक होते हुए देखेंगे, દેન વીલ ડિસાઇડ. फिर हम लोग सोचेंगे कि थर्ड पार्ट कभी अनाउंस करना है। आज पूरी तरह सब लोग पहले दारू पी लें, क्योंकि आज अगर हम इसकी बात करें तो शायद वो लोग दारू नहीं पिएंगे, क्योंकि यार ये वापस बनाने वाला है, फिर से करना है. तो इतना टेंशन में आ जाएंगे सब लोग, सर वापस, सब ग्लास वास छोड़ देंगे बेचारे। सर सर बता, ओके सर। तो आज चुप रहते हैं, शॉक कर देते हैं। True. So True. he is going to be a part of the third film Yeah. too. He already said yes. No, of course. That though, and I want to say this that no, again, not because he's sitting here, because it's like I sent Sir a voice note a couple of days back, and I told him, "Ke, like, see, you're the captain. You know, you made all this go through, but like बोलते हैं ना कि thank you बोलना होता है. This is not that thank you I sent him. I sent him a message of gratitude. Gratitude. कि यार sir, this is not just been a success. This meant something. Like the first one, honestly speaking, I'm not demeaning it. I mean, I know, but it was a success. This is something more. This is something personal. You know what I mean? And he knows it. I know it. Chetna knows it. Everybody in the film knows it. It hit the right place, the right chord, and that's why the message of gratitude was sent. Yeah, sir, ये मौके वापस नहीं आते, you know, because of the journey, you know, what Yeah. he went through, what we all went through. It just felt right. It felt justified. It felt that yes, we all deserved this. Yeah. And because of him, he kept all of us together. You know, he's the core. He's the He's the center. center. Excess. And we all are just the stems. We are just the branches. He's the root. And that's why we all are here. That's why we're talking to you. So I wanted him to know that. And there's just gratitude in my heart. Lovely. So before I let you go, 2 questions. One is specifically for you, કારણ કે તમે ઘણીવાર એવું કીધું છે કે you have your own, I don't know શબ્દ, કનેક્શન શબ્દ વાપરવું કે નહીં, કે એક અનુભવ છે તમારો સ્પિરિટ વર્લ્ડ સાથેનો. Why do you think that is? એ elevated sense તમે ડેવલપ કરી છે, or you have had it always and you discovered it? देखिए, मुझे तो लगता है कि हर इंसान में वो एबिलिटी है, Yeah. लेकिन कहीं हमने उसको शट डाउन कर दी है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो पहली चीज़ आपको ये बोला जाता है कि अगर आपको कोई आवाज़ आती है या You have कोई to pay ख्याल attention. आता है तो उसे इमेजिनेशन मत समझिए, क्योंकि 90% लोग सोचते हैं यार ये तो मेरा इमेजिनेशन है, क्योंकि आपका दिमाग भी आपसे हर वक्त बात करता रहता है, तो आपको समझ में नहीं आता कि यार ये मेरा ख्याल है या किसी की आवाज़ है। बट यू हैव टू ट्रस्ट द वॉइस, Always. जो इनर वॉइस कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं। Yeah. तो आई चोज टू ट्यून इन टू दैट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्यून्ड इन टू दैट फ्रीक्वेंसी, जो अपने आप को फील तो हर आदमी करता है, Yeah. लेकिन कुछ अपने इर्द गिर्द दीवार बना लेते हैं। હા, એટલે એ અનુભવ માટે તમારે ઓપન રહેવું બહુ જરૂરી. You have to be open and you have to be unafraid. So, Mimo, you have worked with him, twice. Third installation, you are going to be there. You already said कि बहुत ही सुंदर रैपो है आपका उनके साथ. कोई सवाल जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, आपको मेरा काम करना है. You have to ask him one question and then we are signing off. One question I think which I can ask sir is how do you remain calm in a world filled with adversity? अच्छा,
पहले तो मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है कि मुझे गुस्सा बहुत कम आता है. एंग्शियस हो जाता हूँ मैं, टेंस भी हो जाता हूँ, लेकिन आई had read a line long back that maturity is the ability to control your first response. What is your first અક્ષતા response? લઈને બેસવું જોઈએ ને મારે તમારી વાત સાંભળવા. So I always question my first response. जब भी मैंने उसे क्वेश्चन नहीं किया है, I have got into trouble. Anger is when you cannot control your first response. आप इमीडिएटली लेट गो करते हैं. लेकिन अगर आप थोड़ा सोचते हैं उस पर, तो 90% ऑफ द टाइम यू फील दैट जो आप सोच रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही है, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, या इतनी कुछ बात बड़ी है नहीं, या अगर बड़ी भी है तो इसके सल्यूशन हैं. तो और प्लस जहाँ से मैं आया हूँ ना मीमो, 11 साल असिस्टेंट था, तो मैं एक ऐसे ऐसे डायरेक्टर के साथ था जिसने बहुत ज़िल्लत से हमको रखा था. माइक पे गाली देते थे, हर वक्त गुस्से में होते थे, कभी हम लोग खाना नहीं खाते थे, कभी एक्टर्स और डायरेक्टर खाना खा लेते थे, पूरी यूनिट भूखी रहती थी. तो मैंने सोचा यार मैं जब डायरेक्टर बनूंगा तब ये तो नहीं करूँगा. Empathy, I think, yeah. इसलिए आप मीमो से पूछ लीजिए 1:30 मतलब ब्रेक मेरे सेट पे. Always to the dot. 1:30 बजे ब्रेक, 9:45 बजे पैकअप, ख़त्म. क्योंकि मैं जानता हूँ कि 12 बजे के बाद ट्रेन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं स्टेशन पे रहा हूँ, 2 बजे पहुँचा, नाइट शिफ्ट के बाद 4:30 बजे 4:45 बजे तक ट्रेन नहीं है. तो वो आदमी के साथ क्या होता है. Very considerate person. No, I have been through it. That's why I'm calm and I never insult anyone. And I have a principle, never insult anyone who is keeping quiet out of helplessness. If you have the guts, insult someone who doesn't need to keep quiet. फिर आप कहते हैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते. लास्ट वन क्वेश्चन, ऐसी कौन सी फिल्म है जो देखकर आप लोग डरे थे? जनरली तो मैं अपनी फिल्म देख के डर जाता हूँ कि यार इसका क्या होगा, अरे यार, चलेगी नहीं चलेगी. नहीं चल. तो दूसरों की फिल्म देख के डरने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे. अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने, क्या बना दिया. એટલે એવું થાય છે ખરું તમને ક્યારે ક્યારે? Every time. વાવ. Every scene. अरे क्या सब रॉन्ग है. आप जवाब दे दीजिए इसका. नहीं, I think वही है. I think you look back into your first phases of your filmography and मैं देखकर हैरान ही हो जाता हूँ कि यार बाप रे, from मैं that ये to कर this, रहा हूँ from that to this. Studio नहीं किसी बट ने कोई मुझे हॉरर पूछा. फिल्म जो आपको बेहद पसंद हो? अच्छा, वैसे अगर पूछो तो हाँ. Sinister. I love Sinister. Yeah, it's one of my most top favorite films. वो एक ही फिल्म है, you know, which I have reduced the volume and switched on the lights and seen it. I found it very scary. You know, very very scary. Yeah, Sinister. Yeah. So on this note, I think I'll let you go. We'll sign off. Thank you very much. Thank बहुत you. मजा आई बात करवाने. I hope you also enjoyed Of the course. conversation. Thanks. Thank you very Absolutely. much. Thanks a lot. Thank you. Thank you.